Hello all, welcome to another Health Talk with Manipal Hospitals. Do you know that India has the second highest number of obese children in the world? Yes, it's a fact and it is alarming. So we always, say that food is the only cause of behind obesity. But then, is this the only factor or are there more that we are overlooking? So in this session, we'll find more about childhood obesity with Dr. Arun Bhardwaj. He's consultant minimal access and bariatric surgery at Manipal Hospitals. Doctor, welcome. So we'll begin the session with by breaking down this term childhood obesity. So basically, childhood obesity is something which means those children who are obese or overweight. So if we want to specifically quantify it, so as per the growth charts, there are growth charts which are available for all the children of different age groups. So when the weight is more than 95th percentile, so I think so for a general population it will be difficult to make them understand what a percentile is, but you can definitely see your pediatrician who can basically tell you whether your child comes in the category of an obese or might be a morbidly obese category. So technically speaking, this is what is childhood obesity. But as such, also by the look, by the physique of the children, you can say whether this child is obese or not. So that's how you quantify it. So why this term is trending these days and why it's so concerning now? Actually, if you see even in India and the Indian statistics and data, few years back, malnutrition and malnourishment was the problem which was more concerning. But nowadays it is almost balanced that we have equal number of obese children as compared to malnourished children. So that's a problem which is alarming, which is increasing. And in this COVID pandemic, even now we have become more confined to our home and less physical activity, more even medically also. We are medically or might be even for adults there are a lot of webinars and the physical activity had gone down a lot. So if you go by statistics, now almost 1.5 crore children in India itself are obese. And if you go just by the population of the children, then almost 15% of the children come in the category of obesity, which is quite alarming. So, so this is becoming a problem which needs to be addressed at the earliest. Also, 2 out of every 3 obese children, when they get older, when they become an adult, 2 out of 3 will continue to be obese. So they will have problem of obesity even in their adulthood with the other problems that come along with diabetes, BP and other medical issues. So this problem has to be tackled at the earliest. जितना जल्दी हम पहले उस चीज को एड्रेस कर सके, बाद में जाके adulthood में जाके ये problems होने के chances कम होते हैं. So that's where we have to think about it and we need to address it at the earliest. Right. So what are the reasons behind childhood obesity? There are multiple factors. It is multifactorial. We just can't say first of all हमें ये समझना पड़ेगा कि always हमारी body it's like a तराजू की तरह है कि the amount of calories that we consume versus the energy that we spend. So आजकल क्या है, calories consumption is more because of junk food, soft drinks and many other things which are not that healthy, and the energy being spent is less because of less physical activity, more dependence on might be technology, mobile, sedentary lifestyle. The lifestyle is quite sedentary. So first these two have a very strong role to play. Then further, if we go ahead, then there are certain endocrine or certain genetic issues which need to be addressed because certain kids, even though they are physically active, even though they are not eating much, but still they continue to be obese. Then genetics come into play. Your endocrine issues come into play. Might be something like a kidney disease, a nephrotic syndrome, might be a Cushingoid syndrome, which is related to steroids in the body. So these are certain issues which are medically causes of obesity in childhood. So there are people who are concerned that if they are obese, then they might pass on this. So is there any there is a genetic predisposition. You will find families, their obesity run in families, where the father or where the mother they are obese. Earlier the child was not that, but with time they start gaining weight because this is something which runs in families like diabetes, like blood pressure. These are the things like they run in family के mother father को होता है या दादा को था, मामा को था, तो उनसे फिर वो pass on होता है. तो ये एक valid concern है. तो
ये इट शुड बिकम मोर ऑफ अ गाइडिंग फैक्टर कि अगर एज पेरेंट्स आप थोड़े से हेल्दी हो तो यू शुड बी मोर यू शुड बी अवेयर दैट के बाद में आपके बच्चों के लिए वो एक पॉसिबिलिटी एडल्टहुड में है। तो इसीलिए करेक्टिव स्टेप्स और जो भी हम कर सकते हैं वो हमें अर्ली चाइल्डहुड से ही करना शुरू कर देना चाहिए। So it's important to nip it in the bud Absolutely, because absolutely. you can pass it on to Absolutely, future absolutely. generations. So coming to the how people can tackle this and what are the preventive measures they can take. Okay. So having said that, I would like to might be divided into multiple categories. First, let's talk about diet. If you are talking about diet, so I think so. पहले तो मुझे लगता है कि there is a lot of initiative as well as a lot of push from it is market driven. That अगर आप TV देखोगे, YouTube देखोगे या आप net देखोगे तो there are a lot of advertisements for food which are not that healthy. Junk foods, soft drinks, beverage drinks. मुझे लगता नहीं कि शायद कि फ्रेश फ्रूट जूसेस हो गए या हेल्दी फ्रूट्स इनकी उतनी कोई मार्केटिंग होती है rather than जो बाकी चीज़ें which are good to taste but they might not be that healthy, they are being marketed much more. So ये चीज़ से हमें थोड़ा सा बच के रहना होगा। यहाँ पे क्या है कि basically we have to depend more on the natural things that we have. As I said, fresh fruits which are there might be अगर juices है तो fresh fruit juices which are there. फिर घर का अच्छा बना हुआ खाना which is a balanced diet. थोड़ा सा refraining from might be junk food like pizza, burgers. Once in a while they are fine. मतलब you can have a cheat day in a week कि हफ्ते में एक बार खा लिया ठीक है, लेकिन हफ्ते में 3-4 बार वही चीज़ खा रहे हैं। As parents भी कई बार हम encourage करते हैं कि चलो बच्चों को भूख लगी है, चलो कुछ नहीं यार एक चिप्स का पैकेट पकड़ा दिया, बिस्किट का पैकेट पकड़ा दिया। This is something rather than giving them an apple, might be काट के देना पड़े या फिर उनको ऑरेंज दे दिया या उनको बनाना दे दिया, ये देने की बजाय क्या सिंपल सी चीज़ है, पैकेट पकड़ा है वो अपने आप फाड़ेगा बच्चा खा रहा है। तो एज पेरेंट्स आई डोंट थिंक सो कि हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी बनती है। तो फूड में बेसिकली लेस ऑफ जंक, मोर ऑफ फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, घर का खाना एंड अवॉइड ऑल दोस थिंग्स व्हिच हैव लॉट ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, एक्सेस शुगर, एक्सेस फैट, एक्सेस सॉल्ट, ऑल दीज थिंग्स आर हार्मफुल। एज सच एक्सेस कुछ भी है वो हार्मफुल ही होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको जंक में, आपको प्रिजर्वेटिव्स में, फूड में, इन सब में मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी ज़रूरी है। तो फर्स्ट तो हो गया डाइटरी फैक्टर्स। नाउ कम, ये हो गया अपने एनर्जी जो हमने कंज्यूम किया उन्हें कैसे स्पेंड करना है। सो नाउ कम्स द पार्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, योर लाइफस्टाइल। अब क्या होता है एज पेरेंट्स हम लोग कई बार ये सोचते हैं कि चलो यार बच्चों को खेलने के लिए भेज दिया, बच्चा तो 1 घंटा नीचे खेल रहा था, अपनी एनर्जी स्पेंड करके आ गया, लेकिन वन नीड टू रियलाइज कई बार बच्चा उससे भी खेल नहीं रहा होता, बैठ के बातें कर रहे होते हैं। इट इज नॉट अ डेडिकेटेड एक्टिविटी, नॉट अ डेडिकेटेड फिजिकल एक्सर्शन। तो यहाँ पे मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि इट इज गुड टू हैव 1 hour ऑफ अ डेडिकेटेड फिजिकल एक्टिविटी, something like a sports activity. Get them enrolled in might be basketball, football, They cricket, are not tennis. sweating if they are even they are out. Absolutely. So they might not be using that calories which they have taken. So इसीलिए basically हमें dedicated activities, sports activities might be get them into competitive sports. Competition is something which pushes anybody to their limit. So get them a little bit, but don't pressurize them. So having said that, कई बार as parents क्या होता है फिर हम उनको ये क्या है ना, अगर आप बहुत ज़्यादा pressure डालोगे, जैसे स्टडीज के लिए भी है, आप बहुत ज़्यादा प्रेशर डालोगे तो some kids they get energetic but some kids buckle down, मतलब बेसिकली वो दब जाते हैं क्योंकि वो प्रेशर मत डालो, let them enjoy, लेकिन get them enrolled into such activities. अब having said that, यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगा मेरे भाई का, बिकॉज सिर्फ बोलने से नहीं होने वाला है, you have to be with them, you have to do it with them. मतलब अगर साइकिलिंग या कोई भी एक्टिविटी आप साथ में इन्वॉल्व हो, अगर बैडमिंटन आप साथ में इन्वॉल्व हो, जैसे माय एल्डर ब्रदर, माय नेफ्यू डिड अ साइक्लिंग ट्रिप from all the way Manipur, Imphal to Delhi. That was 2600 kilometers over 32 days, and he is 10 years old. That initiative was taken by my grandfather. It was in the memory of Netaji Subhash Chandra Bose, but the training was entirely done by my elder brother. So he as a father used to train him for rigorous 2 months, 2 to 3 months, he rigorously trained him for daily cycling of 60 to 70 kilometers, and he used to accompany him. And during that trip of 32 days, he was there along with his child. तो दोनों फादर और बेटे दोनों ने मिलके किया। And similarly now I am doing with my daughter, she is 7 years old, so we go out for cycling together in the morning, might be before the school. So सिर्फ बोलने से काम नहीं बनेगा, हमें जो है खुद पुश करना पड़ेगा, और बच्चा वही करता है जो वो देखता है। Teach what you preach. Absolutely. अगर आप खाने का भी है, आप बैठ के अच्छे से समोसा ले रहे हो या दिन में हफ्ते में 3-4 बार जो है अच्छी अनहेल्दी चीज़ खा रहे हो, अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको बच्चा हेल्दी खाएगा, वो नहीं होने वाला।
चाहे कितना भी उसको लेक्चर दे दो, कितना भी बता दो, कितना भी कह दो, what you are doing they are observing, they are very keen observers, जितने हम भी नहीं हो चाहे, they observe your even small things. You get surprised even by 2 or 3 year old को ऐसी बातें बोलेंगे जो आपको देखते हैं बोलते हुए, ना कि आपसे सीखते हैं. तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. और लास्टली एक ये है कि भाई हमारी आजकल डिपेंडेंस, देयर इज अ लॉट ऑफ डिपेंडेंस ऑन मोबाइल फोन्स. हमारे एरा में आई थिंक सो पहले टीवीज ही थे, बट नाउ यू आर हैविंग मोबाइल, नाउ यू आर हैविंग आईपैड, टैबलेट्स व्हिच आर देयर. तो एज पेरेंट्स अगेन वही होता है कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है जी, मोबाइल, मतलब 6 महीने 1 साल के बाद ही बच्चों को हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया जाता है, उनको मोबाइल देकर ही खाना खिलाया जाता है, फिर वही आदत उनकी कंटिन्यू रहती है. तो वी नीड टू लिमिट दैट स्क्रीन टाइम एज इट इज. जो स्कूल का जो हमारा शेड्यूल है, स्कूल का वर्क है, उसमें से 1-1.5 घंटे का काम तो हमारा कंप्यूटर पर वैसे ही होता है. उसके ग्राउंड में बच्चे 3-3, 4-4 घंटे लगे रहते हैं, कोई वीडियो गेम में लगे, कोई लगे. इंस्टेड ऑफ वीडियो गेम्स एंड इंस्टेड ऑफ प्ले स्टेशन, इट इज गुड टू सेंड देम टू आउटडोर एक्टिविटीज. बाहर जाके खेले. जो 1 घंटा वो प्ले स्टेशन पे बैठ के कर रहे हैं, जिसमें उनकी कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही है, आईसाइट उनकी वीक हो रही है, ब्रेन डेवलपमेंट इतना नहीं हो रहा है, इट्स बेटर वो बाहर जाके खेले. प्लेग्राउंड हो गया या फिजिकल एक्टिविटी होगी, गेट देम एनरोल्ड इन डांस क्लब. और ये एनरोलमेंट से मुझे और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्कूल आल्सो हैज टू एनकरेज, बिकॉज 1/3 ऑफ द लाइफ ऑफ चिल्ड्रन इज इन द स्कूल. इट्स नॉट दैट कि पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं है, लेकिन स्कूल ऑलमोस्ट बच्चा 6 से 8 घंटे स्कूल में होता है. तो एक दिन का 1/3 हिस्सा जो है वो स्कूल में बिता रहा है. तो उधर भी फिजिकल ट्रेनिंग एक्टिविटीज या डांस क्लब्स हो गए, स्पोर्ट्स हो गया, वो सारी चीज़ें इंकरेज की जाए. पेरेंट्स को एजुकेट किया जाए कि आप इस चीज़ में बच्चे को इंकरेज करो, एंड दैट्स हाउ थिंग गोज. अभी रिसेंट कॉमनवेल्थ गेम्स थे, इतने सारे मेडल्स आए बिकॉज अवेयरनेस बढ़ती जा रही है. एंड दैट अवेयरनेस कम्स फ्रॉम बचपन से शुरुआत होकर जब आप कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में डालते हो, तभी धीरे धीरे बढ़ के दे. एंड दे आर ऑल हेल्दी. ऑब्वियसली व्हेन यू आर इनटू सम एक्टिविटी, साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, क्रिकेट हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, बच्चे का इंटरेस्ट जानने की कोशिश करो, उनको उसमें एनरोल करो. तो हेल्दी ईटिंग, good amount of physical activity, exercise, less screen time, less use of mobile, encouragement from parents side, from school side, teachers, even कुछ हद तक जो है गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, डेडिकेटेड साइकिल ट्रैक्स हो, प्ले ग्राउंड्स हो, तो वो भी कुछ इनिशिएटिव लें so that it becomes easier for the parents might be to allow their children to go into parks and play. तो ये सारी चीजें भी उतनी important है. So these are quick takeaways कि you can get creative with the food also. Maybe Yes. Spend some time. Maybe Absolutely. create something food that That they might like. you can have a lot of healthy snacks which are Experiment with the food. experiment with the food. In fact अभी तो जैसे मैंने ये कहा कि अगर किसी चीज़ के कुछ नुकसान है, जैसे मोबाइल हो गया, यूट्यूब हो गया, टैबलेट्स के, उनके फायदे भी हैं. You can get a lot of healthy recipes which are there. They are readily available. They are available on the net, on the YouTubes. But as parents कई बार हम होता है ना कि शॉर्टकट में जो चीज़ जल्दी बन गया. मैं अपने घर में भी देखता हूँ, औरों के भी देखता हूँ कि ये सारे जो फ्रोजन फूड है, मतलब फ्रेंच फ्राइज है, सीधा उसको तला दे दिया, कुछ स्माइली आते हैं, तो ये सारे, मतलब नॉट नेमिंग द कंपनीज है, बट दीज आर वेरी मच गुड बिकॉज दे आर इजी टू मेक, इजी टू गिव, बट दे आर नॉट हेल्दी. ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम ज़्यादा इंकरेज ना करें. बेटर ये है कि ट्राई टू फाइंड आउट वेज ऑफ हेल्दी स्नैकिंग. रात को भी कई बार बच्चे जो लेट तक जगते हैं, फिर देयर इज अ लॉट ऑफ मिडनाइट बिंजिंग. रात को खाना बहुत हो जाता है, उस टाइम पे आप कोई कैलोरीज बर्न नहीं कर रहे हो. तो अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, वही जो पुरानी हमारी कहावतें हुआ करती थी, सो दैट थिंग होल्ड्स ट्रू. सो इट्स ऑलवेज गुड टू स्लीप अर्ली, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, स्टडी इन द मॉर्निंग. ऑब्वियसली यू विल नॉट ईट मच एट नाइट, लेकिन रात को खाए वो सारा आपके पिगी बैंक में जाता है एंड इट स्टेज देयर एज अ पिग. तो वैसे ही रहने वाला है, तो इट्स नॉट गोना गेट यूटिलाइज्ड. तो वो बेसिकली करना जरूरी है. तो कुछ ये छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस है, लेकिन हैव टू बी डन ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस. ऐसा नहीं कि आपने कुछ दिन के लिए किया फिर छोड़ दिया, तो कंसिस्टेंटली करना होगा. जैसे हम स्कूल के लिए बच्चे को उठाते तो कंसिस्टेंटली उठा ही रहना, ऐसा नहीं कि आज बच्चा नहीं उठा. उसी तरीके से फिजिकल एक्टिविटी शुड नॉट बी एन ऑप्शन, इट हैज टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. सो दैट इज इंपॉर्टेंट. And it also gives you, the time, quality time. You can also spend Absolutely, this time absolutely. with You bond a lot with your child. When I'm going cycling with my child, so we talk a lot, we chit chat a lot. During the cycling session also, the 2-3 hours, one day I got her from Question Vihar to Manipal Hospital, we went back, so 30-35 kilometers. It was 3 hours that we spent together. I pushed her also, we talked, and that makes a lot of bonding with your child. Rather than you being busy on your mobile phone, she being busy on video games on your wife's mobile, and everybody sitting in the same room but not communicating with each other. So that communication comes with getting involved with the children.
तो जब ये होता है तो फिर द ओबेसिटी पार्ट डजंट कम मच इनटू प्ले। फिर बाकी कुछ जैसे मैंने बताया मेडिकल कॉजेज हैं तो फिर दे हैव टू बी मेडिकली करेक्टेड। तो वो चीज़ जो है वो मतलब कोई चीज़ ऐसा होता है ना कि हम कुछ पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमने सब कुछ कोशिश कर लिया, इसको एक्सरसाइज ज्वाइन करवा दी, इसको ये भी करा रहे हैं, बच्चा कर भी रहा है लेकिन स्टिल नहीं लूज कर रहा है, तो देन यू नीड टू कंसल्ट द एक्सपर्ट फॉर दिस। So coming to this part only, कि apart from food and lifestyle, what other medical factors that can जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे एंडोक्राइन इश्यूज रहते हैं, डायबिटीज हो गया, कुशिंग कॉइड हो गया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, बाकी कुछ कंजेनाइटल एनोमलीज भी होती हैं, तो ये सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो दिस ऑब्वियसली एवरीथिंग यू कांट गेट फ्रॉम नेट, आपको भी समझ में नहीं आएगा, तो यू नीड टू कंसल्ट योर पीडियाट्रिशियन फॉर द सेम। In case if you need some special help, then you can do it from a pediatric endocrinologist or a nephrologist, and then they can address it whether ये medically manageable है कि नहीं है। अगर medically manageable है तो well and good, फिर वो medical management होगा। The last resort in case of children जो कि हम avoid करते हैं being a pediatric surgeon is a bariatric surgery, which is weight loss surgery, but that is the last resort. For children we are even more cautious because normal जो हमारी bariatric surgery का जो age criteria होता है वो 18 years to 65 years रहता है। लेकिन इवन फॉर सम चिल्ड्रन वी हैव टू मेक एन एक्सेप्शन बिकॉज इनका अगर जो मेडिकल इश्यूज की वजह से जो वेट करेक्ट नहीं हो पा रहा है, एंड मेनी क्वाइट अ फ्यू चिल्ड्रन आर सुपर ओबीज, लाइक जैसे आप बीएमआई कैलकुलेट करते हो, बीएमआई समथिंग बॉडी मास इंडेक्स व्हिच इज कैलकुलेटेड बाय वेट इन किलोग्राम एंड हाइट इन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। ये दो पैरामीटर्स क्यों आते हैं? बिकॉज हर एक हाइट डिफरेंट हाइट के लिए वेट डिफरेंट है, तो इसीलिए आपको देखना पड़ेगा। लेकिन बच्चों में हमें इसलिए वो ग्रोथ चार्ट भी देखना पड़ता है बिकॉज उनकी एज भी इंपॉर्टेंट होती है। तो जैसे बीएमआई के साथ हमें कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच रखना पड़ता है, लेकिन कईयों का बीएमआई बहुत ज़्यादा होता है। नॉर्मल बीएमआई रेंजेस फ्रॉम 18 to 25, लेकिन कई बच्चे ऐसे जिनका 40, 45, 50 होगा, तो इनका मेडिकल इश्यूज है वो करेक्ट होना ज़रूरी है, एंड उसके बाद भी हो सकता है कि उनका वेट लॉस उतना अच्छा ना हो। तो हमें पॉसिबिलिटी हमें हो सकता है कि वी माइट हैव टू बेसिकली कंसिडर बेरियाट्रिक सर्जरी एज एन ऑप्शन, पर हमें उसके अंदर जो है देयर इज अ डेडिकेटेड टीम, a pediatrician has to be involved, might be a pediatric endocrinologist, a dietitian, a physiotherapist, the surgeon himself, and might be the anesthetist, because there are on records there are patients, एक बच्चा जो ऑपरेट हुआ था वो 11 साल का बच्चा था जो कि